Hello friends, today we are going to discuss about integrated goods and service tax and what are the place of supply in different types of situations that we are going to discuss in this video. But friends, before I start my video, don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel so that you can get more videos like this. Now let's begin with the integrated goods and service tax. IGST means Integrated Goods and Service Tax Act. IGST falls under Integrated Goods and Service Tax Act 2017. So IGST is nothing but it is what? It is Integrated Goods and Service Tax and it falls under Integrated Goods and Service Tax Act 2017. Revenue collected from IGST will be divided between central government and state government as per the rate specified by the government. That means whatever revenue collected in the form of IGST, it will be distributed among central government and state government under section 269A. IGST will be charged on transfer of goods and services from one state to another state. Import of goods and services will be deemed to be covered under interstate transaction so that IGST will be levied on such transaction. For example, if goods or services are transferred from Rajasthan to Maharashtra, then the transaction will attract IGST. So when there is a transfer from one state to another state, then IGST will be levied. Say for example, if you are transferring goods from Rajasthan to Gujarat, then which tax is levied? IGST will be levied. So this is the case of IGST. And one more thing, if you import goods from other country, then also IGST will be levied because इसको हम deemed to be consider करते. Deemed means क्या? हम मान लेते हैं कि ये interstate transaction है. Actually ये inter-country transaction है, but we are assuming it as a interstate transaction, and what we levy on it? We levy IGST on it. So that is why when anybody asks you when IGST will be levied, one state to another state, one UT to another UT, one UT with a state assembly to other UT, that is UT with or without स्टेट असेंबली, यहाँ पे भी IGST एप्लीकेबल होता है. देन स्टेट टू यूटी, अगर एक स्टेट से यूटी दूसरे यूटी में जाता है तो भी IGST लेवी किया जाता है. वन स्टेट टू यूटी विथ स्टेट लेजिस्लेचर और असेंबली, तो भी IGST लेवी किया जाता है. देन देर आर सो मेनी केस. इंपोर्ट होता है तो भी IGST लेवी किया जाता है. तो इस तरह से आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक यूटी से दूसरे यूटी, एक स्टेट से यूटी विद स्टेट असेंबली, विदाउट स्टेट असेंबली, कुछ भी ट्रांसफर करते हो, इंपोर्ट करते हो, तो इन दिस ऑल केस IGST विल बी लेविड. स्टूडेंट्स, ऑफ IGST will be distributed among center and state. As known, goods and service tax is a destination based tax. It is very important line, याद रखो. goods and service tax कैसा टैक्स है? destination based tax. That means which would be applicable at the place of the consumption of goods or services. That means जहाँ पे कंज्यूम हुआ है वहीं पे वो एप्लीकेबल होगा. स्टेट GST, central GST and integrated GST are levied on the account of one tax regime across the nation. Central GST is levied by the central government on every intrastate supply of goods and services, and the same fact is applicable to state GST. For inter
state supply of goods and service tax, and on the import there is a integrated GST applicable which will be collected by the center. Interstate supply, then what will apply? IGST will apply. If it is intrastate, that means within the state, then which tax apply? Then CGST and SGST oblique UTGST will apply. So that is said in the second paragraph. Now, integrated goods and service tax is applicable when the location of supplier and place of supply is situated in different state. Deemed interstate supply means what? As a supply of goods and or services in the course of import and export of the goods and or services. So it is very important to understand the two terms, location of supplier and place of supplier. Now, what is location of supplier? It is the registered place of business of the supplier, and place of supply, it is the registered place of the business of the recipient. Location of supplier and place of supply both are in same state. Then, as I already told you, then it is intrastate transaction, and if it is intrastate transaction, then CGST plus SGST oblique UTGST will be levied. Location of supplier means it is a place where supplier is registered, and place of supply means it is a place where recipient is registered. डीम्ड इंटरस्टेट सप्लाई किसको बोलते हैं? मैंने बोला आपको कि जब आप इंपोर्ट करते हो या एक्सपोर्ट करते हो तो उसको हम डीम्ड सप्लाई मानते हैं, और जब आप व्हेन यू आर डूइंग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, then it is considered as deemed interstate supply. Now next one. So it is very important to understand the following terms. Location of supplier, it is a registered place of business, and place of supply, it is a registered place of business of the recipient. Now let us discuss these two examples. X Limited is a supplier of craft products having a registered office in Chennai and Tamil Nadu. It supplies goods to schools in Madurai, Tamil Nadu. Here, since the supplier as well as the recipient is located in the same state, that is Tamil Nadu, it will be counted as intrastate supply of goods, and hence CGST plus SGST will be levied. Because यहाँ पे आप देख सकते हो location of supplier and place of supply both are in the same state. So that means इसकी वजह से CGST and SGST will be levied. But now let us understand another example. X Limited, located in Mumbai, Maharashtra, receives order from Messrs Y Limited, located in Ahmedabad, Gujarat, for supply of one machine. Find the place of supply and applicable GST. Here two questions ask, what is the place of supply? So here आपको दो आंसर देना है. Location of supplier is in Maharashtra, that is Mumbai. Place of supply is in Ahmedabad, that is in Gujarat. Now, since the movement of the goods terminates at Ahmedabad, applicable GST is IGST. क्यों IGST applicable हुआ? Because location of supply and place of supply both are in a different state. सेम स्टेट में नहीं है, डिफरेंट स्टेट में है, इसलिए यहां पे क्या एप्लीकेबल हुआ?
IGST will be levied. The provision of determination of place of supply are different for goods and service, so it is necessary to understand the following. Place of supply of goods and place of supply of services. So पहले हम समझते हैं place of supply of goods. As per section 10 of CGST Act 2017, place of supply of goods other than supply of goods imported into or exported from India shall be as under. यानी ये पूरा चार्ट आपको दिखाया गया है जो सिर्फ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में है, बट इसमें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इंक्लूड नहीं किया है because it is other than import and export. There are total 6 cases. Let us discuss these cases one by one. Here just title is given and then further explanation of this concept are given in detail in coming pages. So there are 6 types. First one, supply involves movement of goods whether by supplier or recipient or by any other person, section 10 subsection 1 clause A of IGST, then place where movement terminates for delivery to the recipient. We will understand this concept later on. Then next point, goods delivered on the direction of the third person as per section 10 subsection 1 clause B of IGST, though then principal place of business of the third person, जहां पे थर्ड पर्सन का प्रिंसिपल प्लेस है उसका वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा. Remember, here answer is given. If you understand with this only, then it is very good for you. Supply does not involves movement of goods, section 10 subsection 1 clause C of IGST, then location of the goods at the time of delivery to the recipient, then goods assembled or installed at site, section 10 subsection 1 clause D of IGST, place of installation or assembly, goods supplied on board a conveyance, section 10 subsection 1 clause E of IGST, location where goods are taken on board. In any other cases, section 10 subsection 2 of IGST, place of supply shall be determined in such manner as may be prescribed. So let us discuss this all cases one by one. First case, where supply involves movement of goods, section 10 subsection 1 clause A of IGST Act 2017. Supply involves movement of goods whether by supplier or recipient or by any other person, location of the goods at the time at which the movement of the goods terminates for the delivery to the recipient. यानी देखो यहाँ पे अगर लाइन पढ़ोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि जहां पे गुड्स का मूवमेंट है, मूवमेंट मीन्स व्हाट, गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहा है, वेदर बाय द सप्लायर और रेसिपिएंट, या तो उसको सप्लायर मूवमेंट करवा रहा है या तो रेसिपिएंट करवा रहा है और या कोई एनी अदर पर्सन उसको मूवमेंट कर रहा है, बाय सप्लायर और रेसिपिएंट और बाय एनी अदर पर्सन. Then in that case, what is the supply of goods, what is the place of supply of goods? So location of the goods at the time at which the movement of the goods terminates. Terminate means जहां पे movement of the goods खत्म होता है for delivery to the recipient. जहां पे goods का movement खत्म हुआ, जो goods को आपको डिलीवर करवाना है, किसको, रेसिपिएंट को, तो जहां पे वो डिलीवरी खत्म हुई है, टर्मिनेट हुई है, उसको हम उसका बोल देते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई. लेट अस अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट with the help of one example. Mr. C of Chennai received purchase order from Mr. H of Hyderabad for want of commercial goods. Now supply involves movement of goods by supplier from Chennai to Hyderabad in a truck by road. देखो यहाँ पे गुड्स का ऑर्डर मिला है मिस्टर एच ऑफ हैदराबाद फॉर वांट ऑफ कमर्शियल गुड. सो मिस्टर सी को ऑर्डर मिला है, he is a supplier, Mr. H is a recipient. Now place of supply of goods is हैदराबाद. क्यों हैदराबाद आया? बिकॉज यहाँ पे गुड्स का मूवमेंट क्या होता है, टर्मिनेट होता है. तो
तो ये उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा, बिकॉज ये प्लेस किसका प्लेस है, रेसिपिएंट का बोलता है। और हमने क्या लिखा है, लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम एट विच द मोमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट्स फॉर द डिलीवरी टू द रेसिपिएंट। जहां पे रेसिपिएंट रहता है वहीं पे गुड्स का डिलीवरी टर्मिनेट हुआ है, वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। एंड देन इन दैट केस विच टैक्स विल बी लेविड, आईजीएसटी विल बी लेविड स्टूडेंट्स। क्यों आईजीएसटी विल बी लेविड, बिकॉज चेन्नई एंड हैदराबाद आर लोकेटेड इन डिफरेंट स्टेट। नाउ नेक्स्ट वन, द सप्लायर डिलीवर्स गुड्स to a recipient or any other person on the direction of a third person by way of transfer of document of title to the goods or otherwise, section 10 subsection 1 clause b of IGST Act 2017। this is the second case। यहाँ पे गुड्स डिलीवर किया जाता है टू द रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ द थर्ड पर्सन बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स और अदरवाइज, जो हमने सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लोज बी में कवर किया है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, गुड्स आर डिलीवर्ड बाय सप्लायर टू अ रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन, किसी को भी हो सकता है, रेसिपिएंट को हो सकता है या रेसिपिएंट चाहे उसको बोले उसको, ऑन द डायरेक्शन ऑफ द थर्ड पर्सन, कोई थर्ड पर्सन के डायरेक्शन पे, वेदर एक्टिंग एज एन एजेंट, या चाहे वो एजेंट भी हो सकता है या कोई और कैपेसिटी में भी हो सकता है, अदरवाइज बिफोर और ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द गुड्स बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स और अदरवाइज, इट शैल बी डीम्ड दैट द सेड थर्ड पर्सन, यानी सेड जो थर्ड पर्सन है जिसके डायरेक्शन पे ये मूवमेंट होता है, हैज रिसीव्ड द गुड्स एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, हियर इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, of supply such goods shall be the principal place of business of such person। जहां पे ये थर्ड पर्सन रहता है जिसके कहने से ट्रांजैक्शन हुआ है, उसका जो प्रिंसिपल प्लेस है वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ओके, तो यहां पे एक एग्जांपल से समझते हैं। यहां पे इसको, मिस्टर सी ऑफ चेन्नई रिसीव परचेज ऑर्डर फ्रॉम मिस्टर एच ऑफ हैदराबाद for want of commercial goods। Now supply involves movement of goods by supplier from Chennai to Hyderabad by road in a truck। Upon the direction of Mr. H of Hyderabad, these goods are redirected to branch office of Mr. H located in Vijayawada by way of transfer of documents of title to the goods। अब यहाँ पे गुड्स पहले चेन्नई से हैदराबाद गया, बट हैदराबाद में उसको रीडायरेक्ट किया गया गुड्स को, और इसका अपॉन द डायरेक्शन ऑफ मिस्टर एच ऑफ हैदराबाद, दिस गुड्स इज रीडायरेक्टेड टू द ब्रांच ऑफिस इन विजयवाड़ा। सो नाउ इन दिस केस व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, वेदर इट इज चेन्नई, वेदर इट इज हैदराबाद और वेदर इट इज विजयवाड़ा। सो आंसर इज प्लेस ऑफ सप्लाई of goods is Hyderabad। and what is the place, because on the direction of this person goods is transferred to the branch office, so that is the, here it is a place where third person is located and on his direction goods is transferred to the branch office, so that is why ये PPOB है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द थर्ड पर्सन, और यहां पे ही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। shall be deemed that the said third person has received the goods and the place of supply of such goods shall be the principal place of business of such person। यहाँ पे ऐसा है कि जहां पे जो प्रिंसिपल प्लेस है वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, क्योंकि हम ऐसा ही मानते हैं कि उसी को गुड्स मिला है, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है देखो, डीम्ड, it shall be deemed that the said third person has received the goods and the place of supply of such goods shall be the principal place of business of such person। जहां पे वो थर्ड पर्सन रहता है वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। स्टूडेंट्स, like, share and subscribe my YouTube channel for more videos like this।